Adaptation. ग्राफ हो गया तो आई थिंक ठीक है ओके हमने आई थिंक फोटोसिंथेसिस पूरा कंप्लीट कर दिया था इन टर्म्स ऑफ योर फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स इंटरनल फैक्टर्स external factors में it was temperature carbon dioxide sunlight as well as water content and internal factor में the structure of the leaf the way the leaf is arranged all that from the structure of the leaf उसके बाद there was about the experiments अपन ने already पहले ही खत्म कर दिए so officially we have completed now how many chapters we are done फर्स्ट चैप्टर हो गया जेनेटिक्स स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम देन एब्जॉर्प्शन ट्रांसलेशन नो फोटोसिंथेसिस केमिकल कोऑर्डिनेशन ओके सो अब एक ही बचा है वो है ट्रांसलेशन अबाउट नीचे वाले पार्ट में कुछ चैप्टर खत्म किया है एक ही और उसके बीच में कुछ भी नहीं ओके सो वी आर लेफ्ट आउट विद अ स्मॉल पार्ट इन द फोटोसिंथेसिस दैट इज कार्बन साइकिल अब जब कार्बन साइकिल में ये आपने लोअर क्लासेस में खुद भी पढ़ा होगा इन टर्म्स ऑफ कार्बन साइकिल दे आर गिवन यू सम स्टेप्स ओवर देयर फोटोसिंथेसिस आएगा ना फोटोसिंथेसिस फूड चेन देन रेस्पिरेशन डीके combustion and lastly that is heating limestone. Now how do I put this into parts is the CO2 which is present in the atmosphere is first taken up by plants in a process known as photosynthesis. The plants are eaten up by animals. Okay, so here food chain comes into picture and both plants and animals they undergo process known as respiration which also gives out carbon dioxide, whereas both plant and animals also death and decay. So when they die and they are decomposed, again they release back the carbon compounds into the soil. Okay. Now this carbon compounds are released into the soil. They will be again utilized by the next plants and again through the food chain. Again the cycle continues. Apart from that, in the aquatic food chain, the organisms when they die and decay, they form sedimentary rocks. From that we get limestone. Obviously, when we heat the limestone, again it releases carbon dioxide. So this is how the carbon dioxide is been recycled. अब इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, okay? The carbon dioxide coming back to environment. There are many steps. Like respiration से CO2 रिलीज हो रहा है, death and decay से CO2 रिलीज हो रहा है, limestone बंद किया तो CO2 रिलीज हो रहा है, okay? Yeah, the death and decay में they convert into fossils. Fuels which on combustion again gives me carbon dioxide. So burning combustion again gives me carbon dioxide. तो यहाँ से CO2 निकल रहा है, यहाँ से भी हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है. Sources of CO2 into the environment is more, but sources of CO2 utilized by the environment is only one, and that is photosynthesis. And that's why if we want to sustain life on this earth, the most important thing is we need to undergo afforestation, because till the time plants are there, the plant will utilize the carbon dioxide and in turn releases oxygen, which is a necessary gas for sustenance of life on this planet. इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे because basic general knowledge जो lower classes में भी पढ़ते आए. So by that we have completed the photosynthesis chapter.
So now choice आपके ऊपर. We go with the transpiration. Yeah, we go with the animal physiology chapter. सर ट्रांसपिरेशन पढ़ाई है. Okay, फर्स्ट टर्म का एग्जाम का क्वेश्चन क्या है? Brand का normally first grade होना चाहिए. Okay, we go ahead with the transpiration chapter. Okay, syllabus खत्म करना है for the exams, so I think I need to go ahead with the transpiration part. अब transpiration again chapter अगर लिखा जाए तो बहुत ही छोटा chapter है. It is much smaller chapter because इसमें पढ़ने लायक सिर्फ 2-3 ही part है. So it is more scoring if you learn transpiration. Okay, एक तो definition है और इसमें questions are based upon experimental part only. The experiment part ही ज्यादा question में पूछेंगे. So going ahead with the transpiration, we go with the definition part first, but before that, I think I'll put the PowerPoint. Okay, how do you define transpiration? Okay, अगर फिश मार्केट खत्म हो गया होगा तो अपन शायद थोड़ा ढंग का आंसर देख लेंगे तो बेटर होगा. Yeah, last bench. जैसा लगा एक को बोलेगा. Okay, the loss of water in the form of water vapor from the is known as ठीक है. कैमरा दिखेगा, वीडियो, ये बोर्ड दिखाई दे रहा है कौशल? हाँ सर. पीपीटी दिखाई दे रहा है? सर अभी बोर्ड नहीं दिख रहा, अभी बस वो जो पीडीएफ आप खोल के रखे हो वो दिख रहा है. हाँ सर अब बोर्ड भी दिख रहा है. Okay. Then, if you cooperate, we would complete this chapter much faster. ज़्यादा पढ़ने के लिए, so that we can start with the animal physiology. And with that part, we will कुछ करने लगते. क्या बात है? अगर animal physiology पढ़ेगा तो फिर सपने में animal करेंगे. Okay, going ahead with the part is transpiration. Now, the movement is a transpiration. The movement definition is the loss of water in the form of water vapor from the aerial parts of the plant is known as transpiration. Now, यहाँ पे definition था, we have done already. Next, straight away they jumped onto the experiment part. Okay, experiments बहुत simple है. First experiment is to show that the demonstrate the release of water vapor from a plant. So water vapor मतलब by the process of transpiration. So सबसे पहला they have taken a potted plant. On the potted plant they are covered with a polythene bag. Okay.
And on the other side, they are taken just a scale and again covered by a polythene bag. What is the first setup known as? What is second setup? Experimental. Good. I think everybody knows. Up, second question. And I want you to raise your hands and no chorus answers. What would be the observation in the experimental setup? Experimental setup, droplets of water will be observed on the surface. Good. Wrong way. बस मैं wrong बोले सबका हवा गया. Learn. आपका आंसर राइट है, but the moment you write, your marks will be cancelled out. Reason? The observation is there is a formation of water. We are able to see water droplets on the inner side of the plastic bag. अगर आपने सिर्फ लिखा on the plastic bag, तो on का मतलब होता है बाहर की तरफ, ऊपर, which is considered wrong by the book. So here you need to be very specific. Yeah, there are formation of water droplets on the inner side of the plastic bag. Then comes is the second part. For your information, कोई पुदर का यहाँ पे? पुदर. Okay. Today we are completed with the cell meet, biological cell meet, and Poddar was hosting the cell meet for this first time. Okay, so then cell meet जब होता है, so उसके बाद paper discussion होता है on paper. So the paper pattern remains same. The application question ज़्यादा बढ़ेंगे इस exam onwards, and there is no half mark scheme जो मैंने आपको कहा था. So the paper pattern remains. So अगर आपका थोड़ा भी गलती हुआ, 2 mark के definition में सीधा 0 हो जाएगा. So kindly see that tongue say. Next, second is plastic bag. In the second case, control setup में क्या observe होगा? There will be no water droplets on the inner side of the plastic bag. So what does it prove? क्या just the water vapor or the water droplets are coming only from the plant. But in this part, there is no water droplets, showing that there is no water or water vapor present in the atmosphere. वरना यहाँ पे water droplets होनी चाहिए. Clear? Yes. That's the first experiment, which is very simple. Then comes the second one. Second one is a double visual effect for the transpiration process. Now, इनमें 2-3 questions आएंगे. सबसे पहले, they have taken a potted plant. The potted plant is covered by a bell jar. So first setup. Second setup में again potted plant covered by a bell jar, but on one of the okay. Then next is to demonstrate transpiration in plants. Very specifically, children, in this case, you'll find on the bell jar there is one of the leaf you need to attach a cobalt chloride paper. And third is obviously the control setup, just a cobalt chloride paper. Up, यहाँ पे there are 2 observations in. First observation, there are water droplets in the inside the bell. Okay. Second, dual effect में क्या आएगा? The cobalt chloride paper. So what type of question will be asked? दिखाया जाएगा, and they'll ask, what is the paper used in this experiment? Cobalt chloride paper. What is the color of the cobalt chloride paper when dry? When wet or moist? Pink. Why is the pot covered by a plastic bag?
To prevent escape of moisture. अपने एक्सपेरिमेंट में से यू आर राइट, पर अपने एक्सपेरिमेंट से कहाँ लिखना है? To prevent water from escaping. Almost near. Almost near. There is a plastic bag. To prevent the loss of water from the soil, which would interfere with my experiment. And if the water is also there in the soil, na, so that is evaporated, it will come in this bell jar. So how will you come to know? क्या bell jar से पानी, the plant से पानी आया या soil से पानी आया? Our aim is to show that plant undergo transpiration and not the pot undergoing transpiration. So the pot is covered by a polythene bag to prevent the water vapor escaping from the soil into the well. Clear with this? Yes, sir. Everybody? Yes, sir. Okay. So that's about the second experiment in terms of cobalt chloride paper. कभी कभार ये भी पूछा जाएगा, the bell jar which is kept over there needs to be airtight. Okay, ताकि water वॉशर पर वहाँ पे maintain रहे. So we need to seal it with a sealant. What is a sealant normally? Vaseline. Wax के बदले better would be Vaseline. Okay, either Vaseline or grease. Okay, grease use करते हो ना? Almost similar to the Vaseline, petroleum product ही है. That can be used over there. Next is, so it's a double experiment. तो वहाँ पे condenser water into vapor plus change in the color. So color का part लिखा हुआ है, उससे उठा है. Directly we go to next step, that is measurement of transpiration. There are various methods of measurement of transpiration. Book में अलग-अलग method दिया है. Weighing method 1, weighing method 2. तो पहला method देखते हैं. इसमें simple experiment है जो कोई भी करता है. Take a potted plant, weight. Okay, the initial weight comes to 100 grams. Just imaginary example. So 100 gram is the initial weight. Then keep the potted plant in the sunlight for 2 to 3 hours. So what will happen? Assuming transpiration has occurred. Okay. Now again weigh the plant. Same part again you would weigh. Now the weight comes to 98 grams. So how much is the water loss in transpiration? 2 grams. So that will show that the amount which is lost in the form of transpiration. So loss in weight by the plant during the time is due to loss of water by transpiration. Is the first step understood? Simple hai? Second experiment. Second weighing method similar ही है but different type. वहाँ पे क्या किया है? Taken a bell jar which is filled with water, which is filled with water, and it has side arm tube. This side arm tube may be calibrated, may not be calibrated. अपन उसमें वापस Icse numbers है. अब plant लगा दिया है, evaporation will take place from the upper part, transpiration will occur. What will happen to the water level in this calibrated tube? It will decrease. Now, जितना decrease हुआ, if you are able to measure that, calibrated है, मतलब CC लिखा हुआ है, 1 ml, 2 ml, 3 ml, जितना भी गया है, that much amount of water you take in a test tube and weigh it. 2 ml गया, 2 ml को test tube में ले लो, उसको weight करो. Nullifying the weight of the test tube. तो जितना weight आया, that will be the amount of water lost by transpiration. या दूसरा option है कि जितना loss हुआ cc के अंदर, so by rule the volume of water loss is equal to loss in weight. That is 1 cc is equal to 1 gram. So अगर 10 cc loss हुआ मतलब 10 gram water has been lost. That's the second experiment. Again, we are trying to make the major part by weighing either indirectly or directly. Third one. Again a weighing method. Diagram दिया हुआ है. Another method which is used. Take a test tube, fill it with water and place oil onto it and put a plant weight. Considering ये diagram अपन ने absorption में देखा था और जब वहाँ पे पढ़ाया था तो मैंने इस plant पे open करने लगाया था. क्या वहाँ पे root है, यहाँ पे root नहीं है. So it has undergone transpiration ऐसे मान के चलते हैं. So transpiration has occurred. Now you weigh the entire set of this.
Now you cannot wear test tube. Test tube रख के तो weight नहीं करते. So either you need to put a test tube into a beaker or you need to take a cylindrical part, cylinder लेके उसके पानी भर के उसके अंदर plant की करो. Now when you take a beaker and you weigh it, okay, then weighing machine में there is also a button known as tare. T-A-R-E. सुना है कभी? नहीं. क्या होता है? उससे like जिन्होंने सुना है तो क्या है? जो ट्रे आपने रखा है वो जीरो होता है. Good. Then tare is a very important function in a weighing machine. अब अगर कोई भी चीज खरीदने जाते हो, like suppose आपने पोटैटो लिया है, इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन है, तो बास्केट का वेट होगा ना? ओके सर, बास्केट का वेट तो क्या फर्क पड़ता है? इतना तो वेट है, कितना फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा. पर अगर वो टेयर ऑप्शन नहीं होता और भूले भटके से आप ज्वेलरी शॉप में जाए, 10 ग्राम का गोल्ड लिया, वो गोल्ड उसने पेट्री डिश पे रखा, ज्यादा नहीं 2-3 ग्राम का डिश का वेट होगा. सर क्या फर्क पड़ेगा? और ये जनरेशन 1 ग्राम इज इक्वल टू 5500 grams ना, 5500 के आसपास जाएगा. ये 3 ग्राम का 15,000 के आसपास. सिर्फ वो वेट डिश का था, भर के आ जाता अमीरों को. Then tare option would nullify the weight of the thing which is kept first, and then it will take the weight of the part which is put inside it. So अपन बीकर का पहला वेट बीकर को रखना है, टेयर बटन दबाओगे तो बीकर के वेट को माइनस करके अब उसके अंदर प्रेशर करोगे तो वेट दिखाएगा. Then keep the thing in the sunlight for 2 to 3 hours and again weigh it. So when you again weigh it, what will be seen? Reducing the weight. So how much would be the, what precaution you need to take while you weigh? Make sure to avoid नहीं, वो एक्सपेरिमेंट का होगा. वेट करते वक्त क्या प्रिकॉशन? उसके अलावा the most important thing is आपने जो भी बीकर लिया या जो भी चीज ली है उसका ही वेट वापस करो. पहला पता चला एक बीकर लिया था, उसको वेट किया, फिर दूसरा बीकर लेके उसको डाल के वेट किया. आर बोथ द बीकर सेम? दिखने में सेम होंगे, शायद वेट भी सेम हो सकता है क्या? So you have to use the same apparatus which are used for the first time. Am I clear? Everybody? Okay. So that's the weighing method. Next comes is heading दिया हुआ है photometer method. डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, डायग्राम लेबल करने के लिए आता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आता है इन टर्म्स ऑफ प्रिकॉशन एंड लिमिटेशन. दिए हुए प्रिकॉशंस एंड लिमिटेशंस. ओके, अब चलन सबसे पहला डायग्राम. इट्स अ ग्लास apparatus, इट्स अ बोरोसिल ट्यूब apparatus. साइज इतना होता है, अगर स्कूल में कभी देखा होगा तो दिखाएंगे, you will see it afterwards maybe. This much size is the glass apparatus. इसमें there is a part where the plant twig is attached. There is a reservoir which has a stop clock, and it also has a bend tube. One side of the bend tube is towards the plant, another side of the plant tube is the beaker. What you need to do first time? सबसे पहले you fill it with the reservoir, fill it with the water, पूरा पानी से भर देना. Okay, and you place it onto a beaker which is filled with water. What type of water? Plain or colorful? Color. Why colored water? दिखना चाहिए to see the level. आपका आंसर हाफ राइट. दिखना चाहिए पर पानी नहीं दिखना चाहिए, कुछ और. वो मेजरमेंट बाहर की तरफ. Then we are able to see the bubble properly, so that the bubble movement can be traced out in the colorful water. वरना colorful bubble नहीं, the water colorful नहीं तो water colorless, bubble colorless, समझ में नहीं आएगा bubble किधर दिखेगा. Okay, so that is why colorful water is used. So you have fill the water everything. Now comes the next part जो आपकी बुक में लिखा होगा. First precaution of the photometer. What is the first precaution? The photometer should be watertight. The photometer should be completely watertight. Watertight कहाँ पे करना है? These are the areas 1, 2. Okay, these are the only areas जहाँ पे वो part attach होता है, तो वहाँ पे watertight करना है. तो अगर वहाँ पे लीक हो रहा होगा तो पूरा experiment का flop show. So you need to airtight it.
white t-shirt, can you take your bag and move out of the class? एक ही बार बोलूं, take your bag and leave. जो वो रेड शर्ट बार बार बोल भी रहा, सर देख भी रहे हो. Okay, so carry please your word back and please move out of the class. पूरे क्लास में व्हाइट शर्ट में कोई दिख रहा है. I am not interested in your sorry. Carry your bag and out. जितना तू टाइम वेस्ट करेगा उतना तेरा टाइम और मैं बढ़ाऊंगा. So I think I'll throw you out for my entire lectures. Better to go for only today's day. लॉक करके तो भैया को बुलाना. बैग के साथ में क्लास के अंदर एंटर नहीं करना. Okay, so that's the once you do the airtight part, first thing is that you need to make it watertight. तो अपन ने watertight by using the sealant. अब यहाँ पे Vaseline use नहीं करोगे. Okay, Vaseline is not a water tightening, it is air tightening. So क्या use करते हो? Yeah, normally tape use करते हो, पर जैसे कि वो plumbing में use होती ना, वो yeah, then the option would be वो M-seal. Okay, वो use करते हैं for the making it watertight. Then comes sealant. Second precaution. What is second precaution? We have to cut the stem in an oblique manner and inside the wall. पहला समझ में आया. Why oblique? Because it increase the surface area. पानी के अंदर क्यों? के अंदर किधर? Almost 99% right. Xylem. Then when you cut the plant inside the water, we have to create a bubble in this tube. अगर ये ट्यूब है तो xylem भी तो ट्यूब ही है. अगर मैं हवा में कट करता तो xylem में भी बबल जाएगी. So अपने को एक ही बबल चाहिए. तो एक बबल यहाँ पे और 10-15 बबल xylem ट्यूब में. So then again my result would be interfered in that. So I need to cut the plant obliquely and inside the water. That is the second precaution. Third precaution. Right. Limitations. पहला limitation. सबसे difficult task. दिखने में सब बड़ा आसान लगता है. ऐसा उठाने का डालने का बबल आ. Okay. But hell of the life को बबल डालने के लिए. You cannot pick up it so easily और डाल दिया ऐसा बबल आ गया. Okay? एक बबल आना बहुत मुश्किल. बहुत सारे आराम से आ जाएंगे. कितने बार भी करो बहुत सारे. So you are trying for last 1 hour. बबल आ ही नहीं रहे. 10, 15, 20 सारे पर एक बबल नहीं. Okay? So every time the bubble is there, what you will do? Bubble ज़्यादा आ गए. Open the stopcock. Let the water flow. Bubble will rush into this water. Break open. फिर वापस भर दो, पैक करो, फिर वापस उठाओ, फिर वापस डालो, फिर बबल आएगा, फिर वापस हुआ, फिर भरो, फिर डालो करो, करते रहो जब तक बबल नहीं आए. अब नॉर्मली एक बबल आने से रहा. यू आर गुड लक. सुबह सुबह अपनी शक्ल आईने में देखा होगा, नाके आए होंगे तो शायद एक बबल आ जाएगा. पर बहुत कम चांसेस. सो देन देयर इज अनदर ऑप्शन, बेटर ऑप्शन. थोड़ा पेशेंस रखोगे, धीरे से लिफ्ट करोगे. You have to lift this part slightly above the level and then slowly release back. बबल आ गया. 10-15 नहीं आए, एक भी नहीं आए, पर 3-4 आए. 3-4 तो आए. अब जैसे 3-4 दिखाई दिए, ओपन द स्टॉप को. पर यहाँ पे धीरे से ओपन कर. Very slowly, that water slowly rushes over here. पहला बबल गया, बस. सेकंड बबल गया, बस. थर्ड बबल गया, बस. लॉक. बिकॉज अब कितना बचा? एक बबल. उससे अपना काम बन गया. ऐसा नहीं तो ऐसा पर बनेगा.
So now one air bubble is there in the part. Again there are two options. A bubble lock हुआ इधर, जीरो इधर है, okay? तो वेट करो तब तक वहां पे आएगा, अपने को करने की जरूरत नहीं, because at no point we are trying to measure, calculation नहीं है अपने को सिर्फ ये दिखाने का बबल इज मूविंग, तो यहाँ से मूव करे या यहाँ से मूव, बात तो एक ही है. Okay, so here we are just showing क्या, it is moving from here to the 6 centimeter या जो भी होगा, that shows how much amount of water has been taken up. Okay, and this is what the principle of photometer is. Photo मतलब rank, meter मतलब measure. The amount of water drank by the plant, okay, is known as the photometer. अब चलन यहाँ पे एक ट्विस्ट आ जाता है. They will give you experiment. Okay, name the given instrument. क्या लिखोगे? What is the above instrument used for? What is the principle of the above instrument? Measure the photometer. Measure the amount of water lost during transpiration by a plant. No. To measure the amount of water uptake by a plant, which is equivalent to the water lost by a plant. ये लिखना जरूरी है. Then the first and the foremost thing, चाहे वो weighing method हो, चाहे वो photometer method हो, at no point we are measuring transpiration. अपना heading वही था, measurement of transpiration. पर हम कहीं पे भी transpiration measure नहीं करते. Okay? Because it is like, sir, हवा में हाथ डाल के हवा कितना है count कर. It is not possible. Same way, पानी कितना loss हुआ ये मेजर करना इम्पॉसिबल है. So we are just trying to correlate that the amount of water taken by the plant is equivalent to amount of water lost by the plant, because normally a plant absorbs 100% of water, then 99% and above is lost in the form of transpiration, and then comes the same part. Sir, 99 आ गया मतलब 100 ही बोल गया ना, तो ऐसा ही है. हाँ, आपकी डेट में मार्क्स के हिसाब से तो ऐसा नहीं कैलकुलेट किया ना सर. 99 आया और 99.2% फर्क है. तो 99.2 और 99 के बीच में 0.1 के इसमें 1000 बच्चे होंगे, हाँ या ना. तो 99 को कोई वैल्यू नहीं और 0.1 को भी वैल्यू नहीं, अनलेस आईसीएसई में 99.99% आया. ला सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. कोई भी हरा गहरा ला सकते, आजकल आईसीएसई में कोई भी ला सकते. टिप तो बहुत इजी होता है, चेकिंग भी बहुत इजी हो जाती है. स्कूल में मैसेज कर डालते हैं, बिकॉज स्कूल में अगर क्वेश्चन डालेगा तो आराम से. स्कूल में अगर 99 दे दिया, मम्मी 99 तो आ रहा है, आपके बच्चों की जान लोगे मेरे, तो आराम से मम्मी 99 आ, आप घूम फिर के आता हूँ ना, फिर पता चलता है 99 डायरेक्ट 79 पे आ गया. तो स्कूल वाले तुम्हें 79 पे लाके रखते हैं ताकि तुम्हारा हार्ट बीट आगे रहे और मम्मी डैडी बॉम्ब लेते रहे, ताकि तुम 99 पे वर्क करो. क्या क्या नहीं, मम्मी डैडी जैसे नहीं करते. मम्मी डैडी सिर्फ ऐसा खड़े रहते हैं, ये न्यूक्लियर बॉम्ब सब कुछ आजू बाजू वाले ना वो रहते हैं, बिकॉज दे आर फर्स्ट कंसर्न. तुम्हारे बेटे को कितना आया, अपना बेटा बाहर में जाए, बाहर में कितना आया, और फिर गुस्सा कब आता है जब ये कम आया होगा और ये ज्यादा आया है, और वो पूरा टाइम बाहर था, घूम रहा था, दिख रहा था, और मम्मी पूरा साल में बोलते एक तुम उसका भाग फिर रहा क्या टाइम पास कर रहा और उसको ज्यादा आ गया और मेरा तो कितना आया दिए रहा. Then the nuclear world war क्यों रहा. So I think that's the part. अब important thing for you to note is book में there is a blue box given.
उसमें कुछ अजीब नाम दिए हुए। डार्विन फोटोमीटर, वहां पे डायग्राम दिया हुआ है। डार्विन फोटोमीटर, फार्मस फोटोमीटर और एक फोटोमीटर दिया हुआ है गैरस फोटोमीटर। 4 फोटोमीटर है, 4 में से 3 एक प्रिंसिपल का है, चौथा अलग प्रिंसिपल पे होता है। अब एग्जाम में कौन सा आएगा? कोई भी आ सकता, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एग्जाम में तीनों में से कोई भी आ सकता है। कंफर्म गैनॉन्स फोटोमीटर ड्रॉ करने के लिए उसमें कोई डिविएशन नहीं होता। They cannot ask you to draw farmers, they cannot ask you to draw Darwin, not a part of syllabus. But syllabus के बाहर से अगर कोई आया तो ये 2 आ सकते। रीजन, यहाँ पे डायग्राम दिया जाएगा, just they'll ask you name the instrument. So what is the instrument name? Photometer. Then वहाँ पे board is not asking you the name, they are asking you the it's photometer. लिमिटेशन वही रहेगा, प्रिकॉशंस वही रहेंगे। व्हाट इज द प्रिंसिपल? द अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर, और कुछ भी चाहिए नहीं। ओके, वहां पे चिल्ड्रन इंस्ट्रूमेंट ऐसे था गैनॉन्स में, यहाँ पे ऐसे ये रिजर्वायर है, यहाँ पे प्लांट ट्विग है, तो यहाँ पे ये है कैपिलरी ट्यूब जहाँ पे कैलिब्रेशन है। सो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को टेढ़ा करोगे तो बबल इसमें आएगा एंड द बबल मूवमेंट विल बी। तो प्रिंसिपल रिमेन सेम, एप्लीकेशन रिमेन सेम, एवरीथिंग रिमेन सेम, सिर्फ नाम चेंज किया। ये सिलेबस में था 12-10 साल पहले, आपके बुक में डायग्राम था, बाद में निकाल ही दिया और अभी तो है ही नहीं। पर बोर्ड का भरोसा नहीं है, डायग्राम पूछ सकते हैं बट नॉट टू बी ड्रॉन, नॉट टू नेम एज डार्विन। अगर आपको नाम याद रहा तो वेल एंड गुड, नहीं तो अपना फोटोमीटर इज मोर देन इनफ। सेम गोज ओवर हियर, फार्मस फोटोमीटर, कुछ तो ऐसा रिजर्वायर दिख रहा है और प्लांट लगा है मतलब वो फोटोमीटर ही होगा और कुछ है ही नहीं। Here with this part? Yes, sir. चौथा जो है गैरुस फोटोमीटर, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया होगा। किसने के पास ओल्ड टेक्स्ट बुक, कितने जन के पास है? घर पे है लास्ट ईयर का? अगर लास्ट ईयर का टेक्स्ट बुक है तो उस टेक्स्ट बुक में एप्लीकेशन क्वेश्चन ई पार्ट, उसमें डायग्राम दिया, नॉट इन द थियोरी पार्ट। आपका ओल्ड है, ये रहा डायग्राम इस साइड, दैट्स द गैरुस फोटो, नो नीड। ये है गैरुस फोटो, ये आपके ई पार्ट में था ओल्ड बुक में। फिर सबसे बड़ा इसका प्रिंसिपल ही पड़ जाएगा। व्हाट इज गैरुस फोटोमीटर बेसिकली यूज फॉर? अगर आप उस क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया है उसके अंदर, अगर वो क्वेश्चन पढ़ोगे ढंग से तो वहां पे लिखा है इट इज यूज्ड टू मेजर द अनइक्वल ट्रांसपिरेशन रेट फ्रॉम द अपर सरफेस एंड फ्रॉम द लोअर सरफेस। ये ट्रांसपिरेशन रेट अनइक्वल है, ये प्रूव करवा। सो व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑल अबाउट? But taken the 2 parts, 2 vials. इसके अंदर there are again put a vial which is having CaCl2, okay, and then that is attached to a mercury column, okay? And on that main bus there is a leaf cap in between. ऊपर भी seal है, नीचे भी seal है, and there is a CaCl2. Now what is the function of CaCl2? It absorbs the moisture, okay? So the leaf will undergo transpiration from the upper surface as well as from the lower surface. So the water vapor would be absorbed by CaCl2 from here also and here also. Where will be the more water vapor collected? Sir, On the lower surface. There are more stomata on the lower surface rather than the upper surface of a dicot leaf. ये dicot leaf है, because अगर parallel variation है तो monocot है, spread out है तो dicot है। ये dicot leaf है, so there will be more stomata on the lower surface. So this would have more water vapor absorbed. So इसका weight क्या होगा?
ज्यादा होगा. So after experiment you remove these two wires. पहला वेट किया था initially, अब वापस वेट करोगे. So बाद में जब वेट करोगे इसका वेट ज्यादा है, इसका वेट कम है. Showing that there is unequal transpiration. And here mercury is attached because when the water would be absorbed over here, partial vacuum created होगा, उसके वजह से there will be pressure created. तो यहाँ पे movement भी दिखाई देगा mercury. वो तो सिर्फ नाम के लिए, मेन तो इसका वेट करना. Am I clear? This is the Garus photometer. इसका नाम भी पता होना चाहिए और इसका प्रिंसिपल भी पता हो. Am I clear? तो इसके लिए आपके पुराने टेक्स्ट बुक का डायग्राम जो है उसका एक फोटो क्लिक करके अपने पास रख देना. आपके वहां ऐसा कुछ था Garus photometer. Next. ये कंप्लीट कर दिया था, ये भी कंप्लीट कर दिया, लिमिटेशन हो गया. नेक्स्ट हेडिंग given over there is mechanism of, I think, kinds of transmission. How many kind of transmission? 3 types. Somatic, cuticular and इसमें से important मार्क करना lenticular. इतना सही पार्ट है. नहीं उधर नहीं, नेक्स्ट पेज पे lenticular लिखा हुआ, वो तो सिर्फ नाम लिखे हुए हैं. नेक्स्ट पेज lenticular 5.4.3 मिला. Okay, there you will mark it important. Achlan, stomata transmission. Stomata, what are stomata? They are minute pores present on the epidermis of the leaf. Again, पहली गलती, give the location of stomata. Mostly. ये ऐसा mostly present on the lower surface. Learn. Strict question पूछा है. They are present on the epidermis of the leaves. अगर वो लिखना है तो they have to be specific then. They are mostly present on the lower epidermis of a dicot leaf and more on the upper surface of a monocot leaf. So वो ज्यादा रहता है. उससे अच्छा they are present on the epidermis. Epidermis ऊपर भी है, epidermis नीचे भी है. आपने को ये नहीं पूछा है किससे ज्यादा है किससे कम. तो आपने सिर्फ पता है इधर है. तो ये लिखो. Second, cuticular transpiration. When the transmission is lost to the water from the cuticle of the leaf. Cuticle is the layer secreted by the upper epidermis of the leaf. 9th standard tissue chapter. There are permanent tissues, permanent में protective tissues, protective में cuticle. Okay, that was epidermis. Epidermis releases a waxy substance known as cuticle. So the thicker the cuticle, less will be the transpiration. बकवास है ये पूछो नीचे. Lenticular transpiration. मैंने बोला मार्क करने के लिए इम्पोर्टेंट बिकॉज यहाँ से 99% एक ही क्वेश्चन आएगा. वो है गिव द लोकेशन ऑफ lenticels. Okay, so where are lenticels located? Lenticels are minute pores present on the mature woody stem, on a mature woody plant, or on a mature stem of a bark of a plant. Then mature word आना key word है. Now why mature is a key word? Because young stems are green. बोलो right है. Because when the plants are young, the stem. When the plant are young, the stem are green in color. So क्या हुआ? Dead cell? वहाँ पे dead cells क्यों होंगे? हाँ. Need of transpiration is this. तो dead cell bark dead cell से बना हुआ है. बराबर? तो उसमें होल क्यों हो रहा है? That's the function of lenticels. Then, when the plant is immature, the color is green. Plant की size, इस stem का size है. Green color, immature है, green in color. Then, जैसे जैसे time बढ़ेगा, what happens? It matures और ये मोटा होते जाएगा. So it becomes. Now, as it increases in size, पहला ऐसे था, घुसा, अब ये बढ़ रहा है. इस बढ़ने के चक्कर में there is a gap created. पहला ऐसे था. This gaps
which are created are known as lenticels. They cannot open and close. They are open throughout. But stomata can open and close. You can say lenticels like a stretch mark of your body. So now our stretch marks. So what जब skin पूरी तरह से expand होता है, तो वहाँ पे gap create करता है, उसको stretch mark कहा जाता है. Okay, exactly similar to it are lenticels. Okay, so lenticels they are just pores created because of the stem getting enlarged, and that creates a gap which are known as lenticels. उसके बाद एक नीचे pink line लिखा हुआ है. What is it? आपके बुक में जस्ट वो टेबल के ऊपर लिखा है वो लाइन 5.1 टेबल दिया है, उसके जस्ट ऊपर कंपैरेटिव लिखा हुआ है. The stomatal transpiration is more than the lenticular and lenticular transpiration is more than the cuticular. सबसे ज्यादा स्टोमाटा रिलीज करता है, उसके बाद lenticels और सबसे कम cuticular transpiration. फिर उन्होंने डिफरेंशिएट दिया हुआ है in terms of lenticels and stomata. That you will read on your own. Am I clear? Yes, sir. Okay. Next study. What's the time? 8:20. A mechanism of stomatal transpiration. Okay. यह बुक में डायग्राम दिया हुआ है ये 5.7 if I am not wrong. 5.7. 5.7 है. उसके बाद 5.8 दिया हुआ है A और B. Okay. फिर हमें डायग्राम ड्रॉ कर. अब Book भी नहीं है. आधा वही पर. 7 और 5 12 मिनट लगते हैं. सर बट बुक चलेगा. ठीक है. Then we are supposed to draw a combination of 5.7 and 5.8. दोनों का मिला के हमें combine draw करना है. So this and this. अब हमें करना क्या है? हमें डायग्राम ये बनाना है, और इस डायग्राम में ये पार्ट भी इन्वर्ट करना है और ये पार्ट भी इन्वर्ट, बी पार्ट भी. So by that both the diagrams we are able to trace out the movement of water in the stomatal transpiration. तो अभी फिलहाल के लिए अपन स्किप कर देते हैं, विकल्प है नहीं तो अपन फिलहाल नेक्स्ट पार्ट उसका कंक्लूजन. The next part is there is again an experiment to show that there is more transmission occurring from the undersurface of the leaf. अब dicot leaf. अब आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिया हुआ है. अब डायग्राम में चिल्ड्रन कैन यू सी दिस पार्ट? अब आपकी बुक पे देखना, अपर सर्फेस लिखा है, उसके नीचे एक वर्ड लिखा है एडेक्सियल और लो सरफेस में एबैक्सियल. एडेक्सियल एंड वर्ड याद रखना, काम आएगा. So the adaxial is upper, the abaxial is lower, also known as dorsal and ventral. वो भी शायद बुक में लिखा हुआ है, पुराने बुक में शायद है, नए बुक में नहीं है. पुराने बुक में the upper surface is known as ventral. नीचे का पार्ट dorsal होता है, ऊपर का पार्ट ventral होता है. अब which leaf is this? Confusion create करने के लिए they will ask you. It's a dorsiventral leaf. तो dorsiventral का मतलब होता है dicot. So use your brain. Dorsiventral is dicot. अगर monocot होगा तो जितना बोले तो ये भी कितना ज्ञान है. अगर monocot होगा तो isobilateral. Okay, isobilateral. Okay, that's used for a monocot leaf. और dicot के लिए dorsiventral. आपको normally dicot ही रखेंगे, आपको monocot का ही नहीं आएगा. So you have to be just वो dicot लिखेंगे, right? Confusion करने के लिए
the dorsiventral leaf, what would you observe? Okay, so children, अब experiment simple है. I have taken a dorsiventral leaf or dicot leaf on the upper surface and on the lower surface. दोनों की जगह पे आपने cobalt white paper लगाया, उसके ऊपर slide डाला, नीचे slide डाला, clip कर दिया. Because अगर सिर्फ cobalt white paper लगे तो वो रहने वाला नहीं. So in order to avoid that, we have put it on a slide and keep it so that it will remain intact in a proper place. After some time, what would you observe? अभी हाथ ऊंचा करना है, वो आंसर important. or hardly was of the upper part में very pale pink the actual part of the diamond leaf that containing the cobalt and people will remain blue in color. Good. So then, ये expected answer था, जो wrong. Okay, you are not right. Blue in color. ये लिखोगे. Okay, the upper surface, the cobalt white paper will turn pale pink or light pink after a long period of time. Whereas in the lower surface, it will turn dark pink in a very short period of time. Then that itself shows that there are more stomata on the lower surface and there are less stomata on the upper surface. जब आप blue लिखते हो, ये proof करता है कि there are more surface on the lower stomata on the lower surface and there are no stomata on the upper surface. So वो interpretation wrong माना. So it turns faster pink with the part pink, the faster part in the lower part, and very slowly or gradually the paper turns pink on the upper side, showing that there is uneven distribution of stomata on the upper and the lower surface. Am I clear? Everybody? Yes. बुक में बहुत कुछ लिखा होता है, अगर बोर्ड में वही लिखोगे तो 99 पे आओगे. There are certain things जो बोर्ड बुक के हिसाब से नहीं जाता. और Selena is the prescribed group. Yes, sir. Yes. Good. जरा बुक का फर्स्ट पेज देखना, फर्स्ट पेज ऊपर कुछ तो लिखा है ब्लू लाइन के ऊपर. This book is written strictly in accordance with the latest syllabus prescribed by the Council for ICC examination in and after exam 2024. Strictly accordance of the ICSE syllabus. ICSE doesn't prescribe. ICSE का कोई textbook ही नहीं होता for your general information. जैसे NCERT होता है ना CBSE का, वैसा ICSE का नहीं. Reason? ICSE is a minting machine. पैसा छापने की मशीन. Okay? आपका बुक हर साल चेंज होता है. Okay? NCERT हर साल चेंज होता है. Because वो गवर्नमेंट बुक है, ये प्राइवेट बुक है. आप ICSE आप ये यूज कर रहे हो, उधर कोई और यूज कर रहा होगा, 70 एडवेंटिस्ट और यूज कर रहा है, तो आप ही यूज करो ना. पोता हर साल एवरी ईयर पोतार का तो नाटक था ही, क्या अलग ही बुक यूज करते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट वाज तुम्हारा ब्लैक एंड व्हाइट का बुक का प्राइस क्या 410 या 490 है. अब पोता जो यूज करता था उसका 590 था, ब्लैक एंड व्हाइट था. ये कलरफुल है, इस वजह से चेंज कर दिया. अब इसमें वापस ब्लैक एंड व्हाइट पे आएंगे, गारंटी है. उनका पता नहीं लॉजिक क्या रहता है हमेशा. दो तीन साल से वो प्रॉपर यूज कर रहे हैं. So I think and out in this part, answers interpretation ध्यान रखना, cannot be a textbook interpretation. You have to write differently. Next. Plan chart is an experimental type of question. Yes. Majorly experiment, scoring नहीं होता है. Next is factors affecting the rate of transpiration. Book में heading लिखा है ये, Yes, sir. है ना? जहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर लिखा है वहाँ पे जगह है थोड़ी, आगे जगह है ना. okay. उसके आगे लिख देना. एग्जाम में क्या आएगा
Give any 2 factors, give any 3 factors या give any 4 factors. इसके ऊपर तो आने वाला नहीं है. Okay? अब वो factors के नाम पता होना चाहिए. Simple है. Cat HIV, cat has HIV, cat HIV जो भी समझना है. C for carbon dioxide, atmospheric pressure, temperature, humidity, intensity of light will argue. कवर हो गया. Okay? उसके बाद इसके लिए मार्क्स नहीं मिलने वाला है. उसके अंदर एक लाइन बकवास लिखना पड़ेगा. Okay? वो एक लाइन बकवास लिखोगे. सिंपल है. पहला नाम क्या था वो पढ़ लेना. उसके बाद इमेजिन करना कि आपने घर पे हैंकरचीफ है, उसको सुखाने डाला. तो किस कंडीशन में जल्दी सूखेगा और किस कंडीशन में जल्दी नहीं सूखेगा. When there is more variety of winds, there is more temperature, there is more atmospheric pressure, etc., or more intensity of light, the rate of transmission would be high. Okay, but when there is more humidity or there is more carbon dioxide, the rate of transmission will less. Okay, दो इनवर्स है, बाकी सब डायरेक्ट. तो जो बकवास लिखना है उस पढ़ के लिख देना. Am I clear? Okay. उसके बाद 3 minutes more. Internal vector water content of leaf, you read on your own. आ जाएगा वो. फिर adaptation in the leaf to reduce transpiration. अब इसके अपने पास 2 ही मिनट बाकी है, तो अपन जितना होता है उतना कर लेते हैं. सबसे पहला दिया है संकर स्टोमाटा. अब नॉर्मली स्टोमाटा जो होता है अपर एपिडर्मिस से लोअर एपिडर्मिस को होता है. तो अपना जो टीवी है मान लो लिखता है अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस. तो स्टोमाटा इधर होगा या इधर होगा. पर संकर स्टोमाटा में लोअर एपिडर्मिस के अंदर की तरफ. यू कैन सी दिस इज द लोअर एपिडर्मिस और स्टोमाटा अंदर है इधर. 1 2 3 एंड उस स्टोमाटा के कवरिंग होती है ट्राइकोम्स, हेयर लाइक एक्सटेंशन व्हिच आर नोन एज ट्राइकोम्स. तो एक अंदर होने की वजह से वाटर लॉस और कम हो रहा है, उसके ऊपर हेयर्स होने की वजह से वाटर लॉस और कम हो रहा है. सो संकर स्टोमाटा हेल्प्स टू मिनिमाइज द ट्रांसपिरेशन. Pure stomata also has to minimize the transition. One is maximum stomata, one is less stomata. Then वहां पे एग्जांपल है नेरियम लीफ, यहाँ पे एग्जांपल अगेन you can say नेरियम only. Then second is narrow leaves. Example is नेरियम. ये नेरियम लीव्स है. अपने विश्वविद्यालय के बाहर जो कॉरिडोर है उसके अंदर बहुत सारे प्लांट होते हैं, उसमें नेरियम. आपके बहुत सारे बीच में के जो डिवाइडर्स है उसमें ये प्लांट लगाए हुए हैं नेरियम के, बहुत कॉमनली दिखाई देते हैं. तो दिस आर नैरो लीव्स. तो the narrow the leaves, less with the surface area, less with the stomata, less with the transpiration. Then comes reduce exposed surfaces. So less the exposed surface area, less with the transpiration. In the certain leaves are folded on their own. या यहाँ पे you can see they are folded like this. Mango leaf थोड़ा side में wavy होता है. So it's a basically nature's way to minimize the rate of transpiration. Loss of leaves. Instead of leaves, what is doing? लगाई. Then अपना बार-बार दिखाते हो हमारी अक्ल कितनी अच्छी. The cactus has spines and not thorns. Thorns दिखा दान करके आना. Okay? रोज में भी thorns होते हैं. Okay, so are the loss of leaves? No. Spine is a loss of. Okay, so loss of leaves in the cactus. And then thick cuticle to minimize the rate of transpiration. By that, we have completed the part. इसके बाद का आगे बकवास एक ही घंटा लगेगा, एक भी नहीं, आधा घंटा वो बाद में खत्म.
Chalo.